Dear children, today we will be studying about the process of electrolysis and we will understand its mechanism, and we will also understand the quantitative aspect of electrolysis. Okay? Now, electrolysis. Lysis means what? Lysis means what? Breaking down. Right? So, electrolysis means the breaking down or the decomposition of an electrolyte by the passage of electricity through its aqueous or molten state. Electrolysis is not a new term. You had been studying about electrolysis. Now, this electrolysis is carried out in a specially designed cell which is known as the electrolytic cell. So, we can say that the passage of direct electric current through an ionic substance. Now, why do we need, through an ionic substance which is either in the molten state or it is in the solution state, right? Then that passage of electric current will result in what? Result in the chemical reactions at the electrode and the separation of materials. Okay. Now, this is carried out in an electrolytic cell. Now, this is an electrolytic cell, a glass tank, right? So the electrolytic cell basically consists of a glass vessel in which the electrolyte, here we have taken the electrolyte in the form of an aqueous solution, or in the molten state it is taken. Two metal rods are dipped into it and it is connected to a source of electricity, that is battery, right? Now, these electrodes are known as what? These electrodes are known as anode and cathode, depending upon, now anode is connected to the positive terminal of the battery and cathode, just a minute, and cathode is connected to what? Cathode is connected to the negative terminal of the battery. So, depending upon this, the electrodes are labeled as positive electrode, which is anode, and the negative electrode, which is cathode. Now, here you get an important point of difference between the galvanic cell and the electrolytic cell. Recall galvanic cell. Galvanic cell may we had studied that anode, being the source of electron, behaves as the negative terminal, and cathode, being the receiver of the electrons, is termed as the, or is labeled as the positive electrode. Here it is reverse. Here it depends upon what? Here it depends upon the connections. Here it depends upon the electrode which is connected to the positive terminal is known as anode, and that electrode which is connected to the negative terminal is known as cathode. So, very important point of difference between the electrolytic cell and the galvanic cell is that is the signs of the signs of what? Signs of the cathode and the anode. Can you tell me some other differences between the two? Do you remember some? Can you correlate some other differences? One important difference here between the two would be what? Here in the electrolytic cell, what is happening? What is happening? The electrical energy is converted into, so electrical energy is converted into the chemical energy. However, in galvanic cell क्या होता था? Chemical energy is converted into electrical energy. So these are very important point of differences. Okay, so one important point of difference, that arrangement in which the electrical energy is converted into chemical energy, it is electrolytic cell, and the arrangement in which the chemical energy is converted into electrical energy is the galvanic cell. So the differences, as far as the signs of anode and cathode are concerned, that will be your second important point of difference. Okay, so do remember the differences. You have to write a very good answer, enlisting the differences between the electrolytic cell and the galvanic cells. Okay,
Now next we will be, so this is what will happen. See, now this is trying to tell us like what will happen when the electricity is passed. As it is, we know that, see, whenever an electrolyte is dissolved in water or it is taken in the molten state, the electrolyte dissociates to produce what? To produce the positively and the negatively charged ions. Like supposingly here we have what? Suppose we have taken copper chloride. Now this copper chloride will dissociate into Cu2 plus ions and Cl minus ions. Okay. Now what will happen? On passing electric current, what will happen? The positive ions will move towards what? The positive ions will move towards the negative electrode, which is cathode, and the negative ions will move towards the positive electrode, which is anode. So this movement, this migration of the electrons, that means what? These positively charged ions will move towards cathode. That is why they are known as what? Cations. And the negatively charged ions will move towards anode, and hence they are known as anions. So what will happen when they reach at the respective electrode? What will happen? The discharge of the ions will take place. Discharge of the ions means what? Loss of charge. So a positive charge will lose its positive charge by doing what? That means a cation will lose its positive charge by doing what? By accepting electrons. ये electron accept करेगा. Now electron accept करना मतलब क्या? Reduction, है ना? So ये होगा at what? At cathode. Similarly, what will happen? The negative ion will lose its negative charge by doing what? By losing electrons. Right? So it will lose electrons and it will change to the neutral chlorine molecule. So this is what? So that means loss of electron is what? Loss of electrons is oxidation. So so we say that at cathode, what will happen? At cathode, reduction takes place, and at anode, oxidation takes place. Same is happening in the galvanic cell also. Same thing happens. वहाँ पे भी oxidation means anode में oxidation होता है, cathode में reduction होता है, right? So this is about the mechanism of electrolysis, right? So oxidation and reduction in electrolysis, the same thing, reduction and loss of electrons we have already discussed. Now we will be going further in the details. We will be studying the details of the Faraday's laws of electrolysis, right? Now, so Faraday, on the basis of his research, he investigated electrolysis quantitatively, and he said that he found that during electrolysis, the quantities of the substances they depend upon liberated at the electrode, liberated, deposited or evolved at the electrodes. It will depend upon three factors: quantity of current passed, time, duration, and the charge on the ions being deposited. Right? So we will be studying the effect of these factors one by one. So the first law of Faraday's first law of electrolysis, it states that you can be asked to write the statements. Many a times it is asked in boards to state the laws. So you will have to learn these statements as such. So the mass of of an element liberated on an electrode, it can be liberated, it can be deposited, it can be evolved if it is gaseous. So it during electrolysis is directly proportional. So if m is the mass, so m is directly proportional to the quantity of electricity, that is Q, which passes through the solution of an electrolyte. That means what? If m is the mass of the substance deposited or liberated, we know that Q is equal to, but we know that Q is equal to what? IT. So it is here, it is directly substituted. So you can write this as your first step, that the mass of the element liberated is directly proportional to the quantity of electricity Q passed through it. But since we know Q is equal to IT, therefore it can be replaced by IT, and where, to remove the proportionality sign, we introduce a constant which is Z, and Z is known as the electrochemical
equivalent. We will come to that. Okay, so I hope this much is clear. So the mass of the substance is directly proportional to the quantity of electricity Q, since Q is equal to IT, where I is what? I is the current in amperes, and T is the time for which that current will be passed in seconds, right? So therefore M will be proportional to IT, or M will be equal to ZIT. Right, now where Z is what? Z is a constant known as the electrochemical equivalent of the substance. Right, electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent पीछे चलो, let us try to define now Z. Now from this expression, if you say I हमारा 1 एम्पियर है and time हमारा 1 सेकेंड हो जाता है, तो Z M के बराबर हो जाएगा. Right, so Z will be equal to what? M. So from here I can define electrochemical equivalent as what? As the mass of the substance liberated or deposited when a current of 1 ampere is passed through the electrolytic solution for 1 second. So learn the definition, क्योंकि Z की definition also is asked. ठीक है? So when Z is, so here it is a summary of what all we have discussed. So if a current of 1 ampere is passed for 1 second, then M is equal to Z. So that means what? 1 ampere of current is passed through 1 second, then the is exactly equal to what? The electrochemical equivalent, right? Now the quantity, the unit of quantity of electricity, that means जो हम बोल रहे हैं quantity of electricity, that is coulomb, and coulomb is the quantity of electricity. So coulomb define कर रहा है, coulomb यहाँ से ही define कर रहा है, Q is equal to IT. So 1 coulomb कब बोलेंगे? जब current 1 ampere हो जाएगा and it is passed for 1 second. So वो हो जाएगा हमारा क्या? That quantity of electricity will be called as what? Coulombs, right? So again Q is equal to IT, and the larger quantity of electricity is known as Faraday. 1 Faraday is equal to 96500 coulombs. Approximately it is equal to 96500 coulombs. So higher quantity अगर हमने डालनी हो तो that is expressed in Faraday. Now we will be going into the details of this statement later on. Quantitative इसको हम बाद में समझेंगे. Okay? Now, so electrochemical equivalent, the definitions are given, the units are given. So you just, when 1 coulomb of electric charge, उसको और elaborate कर लेना. And you can say when a current of 1 ampere is passed through an electrolytic solution for 1 second, that is also equally correct. Okay? Now, most important as जो हमने समझना है, the quantitative aspects of electrolysis which will help us to solve numericals. ये देखो, the charge carried by 1 mole of electrons, 1 mole of electrons, अगर हम 1 mole की बात करते हैं तो 1 mole is what? The, if I say कि 1 mole of electron will carry how much of charge? So it will be the electron, the charge carried by 1 electron multiplied by what? Multiplied by Avogadro's number, right? Because what? Because the charge carried by because 1 mole is nothing but 1 mole of electrons is 6.022 into 10 to the power 23 electrons, right? So abhi for the charge carried by 1 mole of electrons is the charge carried by 1 electron. Now charge carried by 1 electron is 1.6021 multiplied by 10 to the power minus 19. It is 10 to the power minus 19. And then 1 mole hai to you will multiply by Avogadro's number. So when you do this calculation, you will get your answer as 96487 coulombs, which is approximately written as 96500 coulombs. एंड ये होता है हमारा 1 फैराडे के बराबर, है ना. अभी हमने समझा ना 1 फैराडे एंड कूलम्स का रिलेशन. तो 1 फैराडे मतलब क्या? 1 फैराडे इज व्हाट? 1 फैराडे इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कैरी हाउ मच ऑफ चार्ज? इट विल कैरी 96500 कूलम्स और 1 फैराडे, राइट. सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक थॉरली, तभी समझ आएगा आपको, राइट. फर्दर कैलकुलेशंस, अदरवाइज यू विल बी स्टक विद द कैलकुलेशन पार्ट. अभी जैसे सपोजिंगली इफ आई हैव रिटन ये Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग Cu,
तो दिस इक्वेशन इज शोइंग द रिडक्शन ऑफ कितने मोल्स ऑफ कॉपर आयंस, 1 मोल ऑफ कॉपर आयंस, using how many moles of electrons, 2 moles of electrons, means it requires how much quantity of electricity, how much quantity it requires, what, 2 Faraday, or it requires what, 2 into 96500, समझ आया, it will require 2 into 96500 coulombs, ठीक है. And 1 Faraday of electricity deposits 1 gram equivalent. This is again a very important conclusion कि अगर supposingly if 1 Faraday electricity पास करेंगे तो वो कितना substance deposit करेगा, that will deposit 1 gram equivalent of the substance, equivalent mass of the substance in grams is 1 gram equivalent. So equivalent, 1 Faraday will deposit 1 gram equivalent of the substance. We'll understand this of course with the numericals, right? So ये तीनों जो है ये conclusions ध्यान रखने हैं, right? So equivalent mass कहाँ से आता है? Equivalent mass is the atomic mass of an element upon the valency of the element. This you know, right? So the current of 96500 coulombs, that is known as the Faraday, and ये Faraday 1 Faraday बता रहा है क्या है, 1 Faraday कितना डिपॉजिट करेगा, 1 Faraday will deposit exactly 1 gram equivalent of the substance. 1 gram equivalent of the substance का मतलब क्या है कि supposingly, एक मिनट इसको I'll just write one equation. जैसे supposingly Ag plus 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, and changing to Ag. Now Ag का atomic mass approximately 108 होता है, वैलेंसी 1, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी कितना हो गया, 108, राइट. नाउ Ag प्लस यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट मतलब हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इट कैरी, दैट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल कैरी, इट विल कैरी 1 Faraday, है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1 Faraday. तो ये जो 1 Faraday पास करने से कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, उसका इक्विवेलेंट मास जो होगा वो डिपॉजिट होगा. तो इक्विवेलेंट मास सिल्वर का कितना है, 108, तो 108 ग्राम्स जो है सिल्वर का वो डिपॉजिट होगा ऑन पासिंग व्हाट, ऑन पासिंग 1 Faraday ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आया समझ में. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अगर वही कॉपर होता था तो उसका एटॉमिक मास अपॉन 2 कर लेना था हमने, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 होती थी, तो वो उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, राइट. जैसे अब इस पे आ जाओ, सम क्वेश्चंस यू नो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द बेसिक्स, जो क्वेश्चंस हैं, राइट. So how much charge in Faraday is required for the reduction of 1 mole of Ag plus to Ag. पहले हमने for such questions क्या लिखना है, these are very simple 1 markers, right. ये कोई calculations नहीं है, ये just एक conclusion है, you can say, right. So how much charge in Faraday is required for the reduction of 1 mole of Ag plus. तो पहले reduction reaction लिखो, 1 mole of Ag plus accepting 1 electron changing to Ag. तो अब ये बताओ कि कितने हाउ मच चार्ज इन Faraday, कभी आपको Faraday में पूछेगा, कभी कूलम्स में पूछेगा, तो कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स के दिख रहे हैं, 1 मोल. तो 1 मोल मतलब कितने Faraday, 1 Faraday. तो आंसर क्या आया, 1 Faraday, राइट. नेक्स्ट, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Zn2 प्लस. तो रिडक्शन रिएक्शन लिखा हमने, रिडक्शन रिएक्शन लिखा तो क्या देखा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 Faraday यानी 2 into 96500 coulombs. ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. जैसे अगेन 1 मोल ऑफ Al3 प्लस, Al3 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स, चेंज टू व्हाट, Al, तो कितने Faradays, 3 Faradays. ओके, अभी ये क्वेश्चन देखो, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर वॉज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर 1 सेकेंड, सॉरी 1 आवर. तो हमारा हो गया, आई दिया हुआ है, टाइम दिया है 1 आवर, पर हमें पता है वी नीड इट इन 3600 सेकेंड्स में चेंज कर लिया हमने, राइट. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर मतलब Z डायरेक्टली दिया है. तो हियर तो एवरीथिंग इज गिवन, करंट इज गिवन, टाइम इज गिवन, Z इज गिवन. तो calculate the mass of copper. तो m is equal to what, m is equal to
M is equal to what? M is equal to ZIT. Just substitute all the values and you will get what? You will get the mass of copper deposited on the cathode. Very simple. You have to just substitute it in the equation, है ना, in the formula, right? सो सिंपल है. Z इज इक्वल टू A लिखा है, आप I के चेंज में फॉर्म में ही याद कर लो तो इतने kgs आ जाएगा. नहीं तो ग्राम्स में भी यू कैन use the value of Z if it is given in grams. Straight away use it. Normally it will be given in grams, so straight away you can use that value. Report your answer in grams. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखो. एक now this question says when an aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed. अब पूछ रहा है current. So this is the reaction given to us. अब constant current 5 hours तक हो रहा है. 404 milligrams. Careful रहना in the changing, if the units are required to be changed, so milligrams को will change it to grams. अब कह रहा है current निकालो, तो I निकालने बोल रहे. if a constant current was passed for 5 hours, constant current was passed for 5 hours and then 404 milligrams of copper was deposited. So amount हमारा दिया हुआ है, that is M is given. Gain of 2 electrons means what? 2 Faraday electric charge use हुआ है, right? Atomic mass of copper इतना. Now अब we have to find out what? We have to find out the time for which, मतलब the current passed through copper sulfate solution which will deposit 404 milligrams, right? Now how to solve such questions? Now here we will apply our general understanding. General understanding क्या है हमारी? General understanding, again general understanding के लिए always write the reaction. Cu2 plus 2 electrons giving Cu. अगर 2 फैराडे या 2 इंटू 96500 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास करते हैं तो वो कितना कॉपर डिपॉजिट करेगा? वो 63.5 ग्राम्स कॉपर डिपॉजिट करेगा, बिकॉज वो उसका मोलर मास है. तो ये तो हमारे इक्वेशन से ही समझ आ रहा है कि 1 मोल ऑफ कॉपर आयन के रिडक्शन के लिए 2 moles of electrons are required which will deposit 1 mole of copper. So this is understood from the equation. तो मतलब कि 2 Faraday of electric current will deposit 63.5 what? 63.5 या मैं बोलूँ कि 63.5 grams of copper को डिपॉजिट करने के लिए कितना कूलम्स लगता है? 2 इंटू 96500 कूलम्स लगेंगे. तो 404 मिलीग्राम्स चेंज्ड टू व्हाट? चेंज टू ग्राम्स, दैट इज 0.404 ग्राम्स. 0.404 ग्राम्स को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज लगेगा? सबसे पहले तो ये निकाल लेना है, राइट? तो ये हो गया हमारा. ये बता रहा है हमें कि ये हमने पहले इन्होंने क्या किया? फैराडे में निकाला. डायरेक्टली आप कूलम्स में भी निकाल सकते हो. तो अल्टीमेटली हमने समझा कि ओके 0.404 कॉपर ग्राम्स ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए 1225.6 कूलम्स इलेक्ट्रिक क्वांटिटी ऑफ चार्ज चाहिए, राइट? अब सी समझ आ गया हमें, मतलब क्यू पता है हमें इतना है. I निकालना है हमें, सॉरी T निकालना है. हाँ, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? T. सो हम बोल रहे हैं कि Q वी कुड फाइंड फ्रॉम दिस प्रीवियस कैलकुलेशन, राइट? इसमें हमेशा जनरल अंडरस्टैंडिंग से शुरू करना है कि इतना ग्राम इतने से डिपॉजिट हो रहा है, तो जो भी क्वेश्चन में दिया है उतने ग्राम्स कितने से डिपॉजिट होगा. यू टू बिगिन विद दैट. सो Q इज इक्वल टू, अब हमारा हो गया IT. Q इज इक्वल टू IT में अब Q मुझे पता चल गया विच इज़ 1225.6 कूलम्स. I हमें पता है, उससे हमें I निकालना है. टाइम दिया हुआ है हमें, तो I हमने निकालना है एंड टाइम इज़ 5 hours. तो चेंजिंग दैट टाइम इनटू सेकेंड्स, तो हमारा विल बी एबल टू फाइंड आउट I. ठीक है. Now this you will calculate on your own. Solution of copper sulfate is electrolyzed. Okay, ये भी I think I have solved it. हाँ,
अब इस पे आ जाओ. दिस यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी कैन सॉल्व इट हियर ओनली. सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 minutes विद ए करेंट ऑफ वॉट 1.5 एम्पियर्स. तो ये हो गया हमारा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग Cu हो गया. अब इसमें क्या बोल रहा है, अगेन हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, वेल फाइंड आउट व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड. तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि ये दिस मच इज इक्वल टू हाउ मच Q, है ना. ये मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो है ये Q कितने है. तो Q क्या है हमारा 10 minutes. Q इज इक्वल टू IT है, तो मतलब 1.5 इंटू 10 minutes है. सो 10 इंटू 60. सो ये हो जाएगा, इससे हमारा Q आ गया. अब व्हेन वी फाइंड Q, तो उसके बाद में हम क्या बोलेंगे, उसके बाद में हम बोलेंगे कि 2 इंटू 96500 कूलम्स कितना डिपॉजिट कर रहा है कॉपर, 63.5 ग्राम्स कर रहा है. तो जो भी हमने कैलकुलेशन किया, मान लो x कूलम्स, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा x कूलम्स will deposit how much. So 2 into 96500 deposit 63.5. So x will deposit how much, 63.5 upon 2 into 96500 into x. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये x कूलम्स कहाँ से आ गए हमारे. ये हमारी ये कंडीशन के हिसाब से, भाई ये 10 मिनट्स के लिए अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं और 1.5 एम्पियर्स, तो वो 96500 कूलम्स के बराबर तो नहीं होगा ना. तो हमें वो निकालना है कि वो कितने कूलम्स के बराबर है, एंड देन वी विल अप्लाई दिस यूनिटरी मेथड. सिंपल है. ओके देखो, अब T हमारा 600 सेकेंड्स हो गया. इससे हमने बोला कि 900 कूलम्स आ गया, जो हमने बोला कि x है. तो 900 कूलम्स पास होंगे तो कितना डिपॉजिट होगा. अगर 2 इंटू 96500 कूलम्स पास हुए होते थे तो 63.5 होता था. बहुत अप्रॉक्सीमेशन है इन दिस. 63.5 है कॉपर, राइट. एंड 2 इंटू 96500 यहाँ ले सकते हो आप, ठीक है. ओके सो ये हो गया आपका दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. दिस यू विल सॉल्व ऑन योर ओन, राइट. दीज क्वेश्चंस you will solve on your own. I'll post it again or you can take a screenshot of it. Now, second law of electrolysis. Second law of electrolysis is simply the masses of the different substances deposited or liberated when the same quantity of electricity is passed through the different electrolyte is proportional to their chemical equivalent mass. So it is equal to their simple equivalent weights. तो इसके लिए we can just say, we can go to this figure. Supposingly हमारे 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट. We have taken their aqueous solution and this is how they are connected in series. So when I say they are connected in series, that will ensure what, the same quantity of electricity is passed through the 3 different what, electrolytic solution. Now if the same quantity of electricity is passed, like supposingly if I just compare AgNO3 and copper sulfate, then the result from the second law of Faraday is this, right. So if the result is this, first we'll discuss this result. So mass of silver deposited upon mass of copper deposited is equal to what, equivalent mass of silver upon equivalent mass, एक minute, this is an typing error. So you can say equivalent mass of silver upon equivalent mass of, I correct myself, this is Cu, right, equivalent mass of copper. So mass of silver deposited upon mass of copper deposited is equal to equivalent mass of silver upon equivalent mass of copper. Obviously we know equivalent mass of silver and copper. तो इसमें से अगर मुझे एक टर्म पता है कि ओके सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ तो मैं कॉपर निकाल सकती हूँ. अगर कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ वो पता है तो मैं सिल्वर निकाल सकती हूँ, बिकॉज आई विल बी नोइंग if these terms after the RHS part is of course known to us. So from here if we know either of the terms, we can calculate what, we can calculate for the other substance deposited or liberated. Okay, so this is same quantity of electricity
is passed through them, then the masses of silver, copper and deposited would be proportional to what chemical equivalent masses. This is what we have written in the form of expression, right? And so ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि 96500 कूलम्स अगर पास होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो कॉपर कितना, सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा, जो उसका इक्विवेलेंट मास है, तो इक्विवेलेंट मास उसका कितना है 108. कॉपर का कितना हो जाएगा 63.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे क्योंकि वैलेंसी ऑफ कॉपर इज 2, तो 1 फैराडे डिपॉजिट कितना करेगा 31.75. प्लीज कंफ्यूजन नहीं करना है, 1 फैराडे की बात हो रही है, इसमें हम 1 फैराडे की बात कर रहे हैं. अगर हमने एक्सप्रेशन ऐसे लिखा Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग Cu, तो हम क्या कह रहे हैं कि 2 फैराडे डिपॉजिट कितना कर रहा है 63.5, तो ऑब्वियसली 1 फैराडे कितना डिपॉजिट कर रहा है उसका आधा ना 31.75, तो वही कंक्लूजन वही है, राइट. बट देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग, ठीक है. एंड दैट इज एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन. भाई 1 फैराडे के हिसाब से हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि 1 फैराडे अगर पास होगा तो 1 फैराडे वो सब्सटेंस का कितना अमाउंट डिपॉजिट करेगा, 1 फैराडे डिपॉजिट करेगा जो भी उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होगा. ओके, सो एल्यूमिनियम के केस में कितना हो गया, एल्यूमिनियम के केस में इट इज 9 ग्राम्स, क्योंकि 27/3 कर लेंगे. 27 इज वॉट, 27 इज इट्स मोलर मास अपॉन 3 जो उसकी वैलेंसी है, तो ये हो गए उनके इक्विवेलेंट मासेस, ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन, the very important question. 3 electrolytic cells A, B, C containing of ZnSO4, silver nitrate, copper sulfate are connected in series. ठीक है, 3 electrolytic cells, so you can just replace ये जो है हमारे इस फिगर में, you can just say कि ये जो है हमारे these are what, these are the solutions which are given to us in that numerical question. Let's go to that question. So 3 electrolytic cells and ये है ZnSO4, CuSO4 and AgNO3, they are connected in series. Now it said a steady current of 1.5 ampere was passed through until हमने क्या दिया है, करंट हमारा 1.5 एम्पियर पास हुआ. एंड सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ 1.45 एट द कैथोड, ठीक है, ऑफ सेल बी. इमेजिन वो सेल बी में, हाँ, तो हमारा सेल बी में हमारा क्या है AgNO3 है, तो कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ बता रहा है 1.45. हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, एक तो हमने निकालना है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, यानी टी निकलेगा, टी निकालना है. व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड व्हाट मास ऑफ जिंक आर डिपॉजिटेड इन द कंसर्न्ड सेल्स, मतलब टी निकालना है, मास ऑफ कॉपर निकालना है, मास ऑफ जिंक निकालना है. 3 कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्व्ड, right? Now do I leave it here for you all to calculate, and then you can just share your you can say answers with me, and then we can discuss the calculations, or should I explain? Okay, for this particular question I am explaining, then the other part you can just, I'll post more questions of this type. Now see, silver, how long did the current flow, means T निकालना है, right? 1.1089650 कूलम से 108 डिपॉजिट होता है. 1 सिल्वर का मास बताया हुआ है, तो 1.45 कितने कूलम से डिपॉजिट होगा वो कैलकुलेट करके निकल सकता है. Q इज इक्वल टू IT से T निकल सकता है. जस्ट नाउ इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सेम किया था, वी कैलकुलेटेड, वी found that we found first for Q, then we calculated for, remember in that question we calculated for current, and in this question current दिया हुआ है, तो हमने we have to calculate for T. ये अब हमारा निकल गया फर्स्ट पार्ट कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो. अब तो T भी आ गया हमारा, तो अब कॉपर के लिए मास निकालना है, तो हमने क्या बोलना है कि इतने 2 × 96500 कूलम्स कितना डिपॉजिट करेगा 63.5, तो 1295.6 कूलम्स होते तो वो कितना डिपॉजिट करेगा 0.426, राइट. यूनिटरी मेथड है. एंड जिंक के लिए भी ऐसे ही करना है हमने कि 2 × 96500 कूलम्स कितना डिपॉजिट करेगा 65 ले सकते हैं, अगर इफ वॉट एवर वैल्यू इज गिवन, जैसे इस क्वेश्चन में 65.4 दिया है, तो उतना अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिट कर रहे हैं, उतने ग्राम्स,
तो 1295.6 कितना डिपॉजिट करेगा, दिस हैज कम फ्रॉम दिस कैलकुलेशन, राइट. So this much for today, and practice the questions, right. Some 2 questions I gave you as the practice questions, so you have to solve these 2 questions. You will solve the questions which we discussed in the class, because you will have to solve them again, the same questions you try to solve again without seeing. Okay, so thank you so much.